एस क्लास कल हमने ले लिया क्लास, लेट थोड़ा ले लिया तो ले लिया। What is graphical representation? So graphical representation is that method in statistics in which we present the data in the form of graphs. So that is called a graphical representation. We can make different types of graphs from the statistical data. So these are time series graphs and frequency distribution graphs. You write down. Graphical representation means when data are shown or presented in the form of graphs. In the form of graphs or on a graph paper. On a graph paper, and data are shown on graph paper. So when these data are shown on the graph paper, when they are presented on the graph paper, generally we get lines, curves, which relationship between the variables. Between the variables. So presentation means data are shown on paper. Data are shown or presented in the form of graphs or on a graph paper. It is called a graph. Which types of graphs? So graphical representation means simply means when in the form of graphs. Relationship between the variables. We have graphs, types of graphs. What are the types of graphs? There are mainly two types of graphs. There are mainly two types of graphs. These are time series graph and number two, you can see distribution graph. Frequency distribution graph, time series graph and frequency distribution graph. First of all, we will take time series graph. What is time series graph? Time series graph. Time series graph. लिख लीजिए टाइम सीरीज ग्राफ क्या होता है. So generally
टाइम सीरीज डेटा को हम जब ग्राफ पे दिखाते हैं, दैट बिकम्स द टाइम सीरीज ग्राफ। when datas are when datas which are time series datas, those datas which are related with some time, those are called time series data. Some data yem relate asan with time, with years, with hours, with seconds, with minutes, with decades, etc. Those are called time series data. That is called time series data. आप लिख लीजिए ये what is time series graph. When in a series values of a variable are related to a time period, the series is called a time series. जब datas relate होंगे, when the datas of a series are related with some time, when the datas or value of a series or when datas or values of a series are related to some time period. Time period means years, months, hours, seconds, etc. So data often relate with time period. इस पर भी और तरह से लिख रहे थे year and production, year and this birth rate, year and death rate. That is time series. The series is called time series. Time series. The series is called time series. Time series. Yes. उस सीरीज को हम टाइम सीरीज कहते हैं। तो जब यही सीरीज ग्राफ पे हम दिखाई, when time series is shown on the graph paper, so in this series time variable is shown on this, so thus when time series is shown in the form of graph, in the form of a graph, that graph is called a time series graph. Time series graph. उस ग्राफ को हम टाइम सीरीज ग्राफ कहते हैं। So in this series, the time variable is shown here. In this series, the time variable is shown on x-axis, and the values are shown on y-axis, and values of the variable are shown on y-axis. The time variable is shown on x-axis, जिस तरह years हम इस एक्सिस पे x-axis पे लगाते हैं और values y-axis पे लगाते हैं. So graphical representation of time series data is known as time series graph. It has two types. Time series graph has two types. लिख लीजिए कौन कौन सा टाइप इसका है. So ग्राफ के दो टाइप हैं. पहले हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मीनिंग हमने दे दी, फिर टाइप्स ऑफ ग्राफ के दो टाइप हैं, टाइम सीरीज ग्राफ एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ. टाइम सीरीज ग्राफ के भी दो किस्म हैं. हमने टाइम सीरीज ग्राफ को उठाया, इसके दो किस्म हैं. इट हैज टू टाइप्स. टाइम सीरीज ग्राफ हैज टू टाइप्स. Yes. What are those? These are
these are one variable graph and two variable graph. Two or more than two variable. These are, अगर हम यहाँ ही लिखेंगे नीचे, these are, इसी के साथ लिख लीजिए, यहाँ ही लिख लीजिए, these are one variable graph, one variable graph, and number two more than two variable graph. Two or more than two variable graph. Two Yes. variable. Two variable graph. One variable graph and two or more than two variable graph. Two variable graph. One variable graph and two or more than two variable graph. Two variable graph. Yes. अब उठाइए A, one variable graph. One variable graph. One variable graph. First उठाइए one variable graph. So time series graph has two types, one variable graph and two variable graph. अब लिख लीजिए one variable graph क्या होता है? What is one variable? That graph in which values of only one variable are shown with respect to some time period, that graph is called a one variable graph. That graph in which values of only one variable, values of only one variable are shown with respect to some time period. No, ¿quién es? Me gusta hablar. ¿Vos sabés qué es clase? Ahora está fácil. हाँ जी, कहाँ पहुंच गए हम? One variable graph. One variable graph. Yes, sir. Yes. लिख लीजिए one variable graph. क्या है ये? That graph in which values of only one variable are shown. Oh yes. Values of only one variable are shown with respect to some time period. With respect to some time period. With respect to some time period, that graph values of only one variable are shown with respect to some time period is called one variable. हाँ, जिसमें खाली एक वेरिएबल को ग्राफ पे दिखाया जाए. At a time when only one variable is shown. For example, जैसे हम the graph showing production of a factory. For example, a graph showing production of a factory from January to June. From January to June.
फॉर एग्जाम्पल एक ग्राफ है हमारे पास जो दिखाता है हमें एक फैक्ट्री की प्रोडक्शन, एक फैक्ट्री की प्रोडक्शन month production. Month and production. January, February, March, April, May, June. Five, 7, 5, 10, 12, 8. So this is a table which shows the production of a factory. A factory produces this much of quantity. In January, it is 5, February 7. It can be thousands, 5,000, in thousands. March 5, April 10. So we have to show it on a graph, one variable graph. We can make a graph. OX shows months and OY shows production. X and OY. January, February, March, April, May, June. We have here कितने तक है? 12 तक है. 5, 5, 10, 5, 15, 5, 10 तो 15. जनवरी में 5 है, लेट इट बी 5. फरवरी में 7 है, फरवरी 7. मार्च में 5 है, अप्रैल में 10 है, मई में 12 है, जून में 8 है. ये बनाएंगे हम ग्राफ. So this is one variable graph. इसको हम कहते हैं one variable graph. इसी तरह two or more than two variable graph, that graph in which values of two or more than two variables are shown with respect to some time period. जिसमें एक वेरिएबल है उसमें दो वेरिएबल्स हैं. टाइम सीरीज ग्राफ में इसमें है सिलेबस में. डू वी हैव इन द सिलेबस? हाँ जी बताओ ना. Frequency diagrams, histogram, polygon, and audio. Arithmetic line graph, time series graph. Yes. Arithmetic line graph and time series graph. Yes. अब उठाइए two or more than two variable graph, जिसमें दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स.
be 2 or more than 2 variable graph. Two or more than 2 variable graph. That graph in which values of 2 or more than 2 variables are shown. That graph in which values of 2 or more than 2 variables are shown that graph in which values of 2 or more than 2 variables are related with some time period and shown on graph. It is called 2 or more than 2 variable graph. Two or more than 2 variable graph. So those graphs in which values of 2 or more than 2 variables are shown with respect to time period and shown on a graph paper, it is called 2 or more than 2 variable graph. For example, we have an example. We can show, for example, we have data showing production and sale. Production and sale of a factory from January to June. जो प्रीवियस हमारा ग्राफ था उसमें एक ही वेरिएबल था, that was production of the factory. तो इसमें हम सेल भी दिखाएंगे. So it becomes graph of 2 variables related with some time. So month means time, production and sale. January, February, March, April, May, June. 5, production is 5, 7, 5, 10, 12, 15. Sale is, for example, 7, 10, 7, 12, 15, 17. So this is production and sale of a factory. ये इमेजिनरी है, हम ऐसे ही ये बनाते हैं, डेटास हैं, खुद बनाते हैं. तो ग्राफ कैसे बनाएंगे इसका? वो एक्स पे, एक्स एक्सिस पे हमें पता है, हमें टाइम पीरियड दिखाना है. दैट इज हियर वी हैव मंथ्स, समटाइम्स इट कैन बी इयर्स अकॉर्डिंग टू द टेबल.
अकॉर्डिंग टू डेटा। OY पे दिखाएंगे वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल प्रोडक्शन एंड सेल। यहाँ दो वेरिएबल हैं, एक है प्रोडक्शन एक वेरिएबल, दूसरा सेल है। These are the values of the variable. This is called variable. This is called values of the variable. This is called time, and these are the time components. Components of time. January, February, March, April, May, June. 5, 10, 15। जनवरी में प्रोडक्शन 5 है, जनवरी में प्रोडक्शन 5, फरवरी में 7 है, 7 है, मार्च में 5 है, अप्रैल में 10 है, मई में 12 है, 12 है, जून में 15 है, 15। दिस इज प्रोडक्शन, इसको हम लिखेंगे प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कर्व। अब सेल लिख लीजिए, सेल। जनवरी में 7 है, जनवरी में 7 है, जनवरी में 7, जनवरी में 7 है, फरवरी में 10 है, इन द फरवरी इज 10, मार्च में 5 है, सॉरी मार्च में 7 है, मार्च में 7 है, इसी तरह अप्रैल में 12 है, अप्रैल इज 12, मई में ये मई में 15 है, मई इट इज 15, जून में 17 है, 17। तो ये मिला दीजिए पॉइंट्स। ये है सेल, दिस इज सेल ऑफ द फैक्ट्री। सो हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट 2 or more than 2 वेरिएबल ग्राफ। इसी तरह ऐसे भी ग्राफ्स होंगे जिसमें 2 से ज्यादा वेरिएबल होंगे, 2 से ज्यादा वेरिएबल होंगे, 2 से ज्यादा वेरिएबल होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा, फिर क्लास हम खत्म। क्वेश्चन लिख लीजिए। Following table shows production of wheat, rice, sugar, gram in India from 2001 to 2000, for example, 7. Construct a suitable graph. Construct a suitable graph. एक ग्राफ बनाइए। एक टेबल हमारे पास है जो दिखाता है 2001 से 2007 तक production of, so we have here a year, we have year, क्या क्या है, wheat है, ये है वेरिएबल, राइस है, शुगर है, ग्राम है।
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. ये है हमारा ग्राफ, ये सॉरी टेबल डेटा। क्या क्या डेटा है? वीट का फॉर एग्जांपल है, we have 50, we have 60, we have 70 for wheat. Yes, it is 80, it is 40, sometimes increase हो जाता है, sometimes decrease हो जाता है, it is again 80. तो ये है wheat है। इस तरह राइस का है, फॉर एग्जांपल we have 20, we have 50, we have 40, we have 30, we have 60, we have for example 70, we have for example 60. शुगर का है 5 है, 10 है, 15 है फॉर एग्जांपल, फिर 5 है, फिर 10 है, फिर 20 है, फिर 25 है। इस तरह ग्राम का है हमारे पास, it is 10 for example, it is 15, it is 20, it is 5, it is 25, it is 30, it can be 35. so ये डेटा हमें दिखाने हैं ईयर को इस पे। तो y एक्सिस पे हम दिखाएंगे राइस, शुगर, वीट, ग्राम एटसेट्रा। तो आपको पहले वीट में जाना है, 2001 में फॉर एग्जांपल 50 है, फिर 2002 में कितना है, 60 है, 70 है, 80 है, एटसेट्रा एटसेट्रा। So this is how to construct a graph for 2 or more than 2 variables when data is year. Previously, in our previous graphs, time was month. Here it was month. Now it is year. Thank you very much. कोई question? कल हम उठाएंगे, ठीक आ गया समझ? कल हम उठाएंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। इसमें हमें हिस्टोग्राम पढ़ना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पढ़ना है, तो बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स हमें मिलेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, ओके ओके, मीटिंग एंड करेंगे अब है। ओके